a full page ad there. I'm going to show you, saying how they are exhibiting at the AI summit with that particular robot. चाइना ने भी तो ऐसे ही सीखा है, उसने जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की उनसे कॉपी किया, उसको ऑब्वियसली कॉपी करने के बाद रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करने के बाद उसको अपने डिज़ाइन, अपने देश के हिसाब से, अपनी यूजेज के हिसाब से उसको अपग्रेड किया. ईगो प्रिवेंट्स लर्निंग in the Indian family businesses, which leads to huge failure. Hi guys, as next generation leaders in the family business, we have to understand that in most family businesses, the mistakes don't destroy reputations. It's how you cover up that does. Today we will talk about a recent fiasco that happened in the recent AI summit that happened in New Delhi, Bharat Mandapam, and one of the reputed universities of the country had displayed a certain robot AI, that innovation that they had called their own. And I surprisingly had read the front page of the newspaper that day, and I saw that robot thing in the news. And I myself was very excited and surprised that, hey, these guys are up to big things. But the cover-up said otherwise, and this video is about not just, I'm not trying to point any fingers on any particular person or any particular organization. This is a video for next gen in the family business. कि यार जो controversy होती है ना अगर, तो वो actual आपका stress test है, आपका actual leadership test है वो. How you get through that. And today we will talk about just that. So this is not about organization. This is not about any kind of कि मैं किसी को बिलिटल कर रहा हूँ. हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट फेलियर्स होते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक शिपमेंट कई बार गलत चली जाती है. कई बार एक गलत पर्सन को वी हायर एंड दैट पर्सन एंड्स अप डूइंग सम काइंड ऑफ डिजास्टर. एंड एज फैमिली बिजनेस लीडर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज पार्ट ऑफ एनी बिजनेस. नो बिजनेस इज परफेक्ट. How do we deal in these situations really matters. So what these guys did, let me show you. This is the newspaper, the Times of India, and they have a full page ad there. I'm going to show you, saying how they are exhibiting at the AI summit with that particular robot and the thing that they were going to display. See, हमें ये समझना पड़ेगा कि this is something that you attracted the audiences to your stall, to your booth, and maybe you want to show you are innovating, and how you mentioned you invested more than 350 crores and things like that. But how the narrative took off, I would say, is a clear lack of communication or a training to your team, and it could be easily taken in a way कि यार चाइना कैसे आज की डेट में इस heights तक पहुंच गया. It is, how did China become such a top economy that is giving right competition to the United States today? How is it the biggest technology center, the biggest technology country, the way they are operating? And those of you who haven't visited China must visit China. And if you would like to know about the nitty-gritties of China and how to be a good business traveler, and if you like to have a good trip to China, I have also a video for that, and you can check that on my channel. But this is coming back to the point कि यार चाइना ने भी तो ऐसे ही सीखा है. उसने जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की उनसे कॉपी किया, उसको ऑब्वियसली कॉपी करने के बाद रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करने के बाद उसको अपने डिज़ाइन, अपने देश के हिसाब से, अपनी यूजेज के हिसाब से उसको अपग्रेड किया, और इस लेवल पे स्केल कर दिया है कि आज की डेट में द एंटायर कंट्री इज़ sourcing from China. China is right now called the factory of the world. जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग स्केल है, जो उनकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो उनकी अडेप्टेबिलिटी टू सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स है, that is at another level. So we have to learn from them. So China did not become strong by pretending it knew everything. They acknowledged कि भाई हमें आके सिखाओ, हम आपके लिए बनाएंगे. और वो बाकी देशों के लिए बना के इस लेवल पे एक्सपर्ट्स बन गए हैं कि वो आज अपने टेक्नोलॉजी, चाइनीज कार मेकर्स लाइक Xiaomi, like BYDs are giving the Teslas a run for their money. And this is why many Indian family businesses fail. Their ego prevents learning. They think I know it all. मुझे सब मालूम है. अभी recently in a particular discussion with a gentleman in a particular family business,
it was a uncle and a nephew meeting, and I was brought in to just mediate a particular conflict where the nephew is a good 12-year experience in a top MNC, worked in the United States, came back, joined the family business, pharmaceutical business hai. Obviously, I will not name the person or the business here, but what I'm trying to get to is that son or that nephew, next generation, came in and he's asking the uncle here, "Uncle, have you ever run $1 million business?" Uncle said, "No, but we have brought the business from zero until यहाँ तक $500,000 तक तुम ले आए ना, तो आगे भी कर लेंगे." ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, "अंकल, आर यू क्वालिफाइड टू रन अ $1 million बिजनेस?" अरे ये क्वालिफिकेशन क्या होती है, हम यहाँ से यहाँ तक ले आए तो आगे भी ले जाएंगे. देन ही वेरी कामली एंड कूलली एक्सप्लेन टू हिज अंकल, "अंकल, लुक, I have been trained by the top universities in the world. I am working for the top consulting companies in the world. Can you consider for once keeping your ego aside?" And this is how I also explain the uncle, keep your ego aside and consider for once that maybe your nephew is more qualified to run $1 million business than you are. What will it take for you to acknowledge that and be open to that learning? So ego prevents learning in the Indian family businesses, which leads to huge failure. Accept it ना कि हाँ यार हम सीख रहे हैं, हमने चाइना से इम्पोर्ट किया, अब हम इसको रिवर्स इंजीनियर करा रहे हैं. हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर गेटिंग एक्सेस टू द टॉप रोबोट्स बिकॉज वी हैव इम्पोर्टेड दीज फ्रॉम चाइना. सिमिलरली आई वुड इन्वाइट द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, द प्राइवेट वंस, और whoever is watching this, आप इम्पोर्ट करो ना, टॉप गाड़ियाँ इम्पोर्ट करो, क्राइसलर इम्पोर्ट करो, फेरारियाँ इम्पोर्ट करो, टेस्ला इम्पोर्ट करो, उसको रिवर्स इंजीनियर करो, ब्रेक डाउन करो, समझो कि उससे क्या आप सीख सकते हैं, उससे क्या आप उसको ब्रेक ओपन करके हाउ कैन यू मेक समथिंग at par with that for the Indian road conditions, for the Indian traffic conditions. What would that be like? So that ways you will show yourself as the pioneer कि हाँ, हम बाहर से टॉप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम ब्रेक ओपन कर रहे हैं. Imagine another university like that who says, and you show up at the campus and you see a Ferrari that is totally dismantled there. Ferrari का ना V12 इंजन totally dismantle होके वहाँ पे रखा हुआ है कि यार ये हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं ना, उनको सिखाना है हमने ये. I still remember, yaar, there was a particular kissa in, maybe in my second year or something in college where we were learning about the internal combustion engine, how the internal combustion engine works, and 4-cylinder engine की उस पे दिखा रहे थे कि अच्छा जी ऐसे पेट्रोल उसमें आता है, फिर इससे कंप्रेशन होता है, फिर the whole math. So I raised my hand and I asked the professor, and उस टाइम पे Hyundai Verna नई आई थी, CRDI इंजन. तो मैंने हाथ खड़ा किया, प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर ये सब तो ठीक है जो आप सिखा रहे हो, बट ये 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है. आज की डेट में मार्केट में Hyundai Verna नई गाड़ी आई है, उसमें ना CRDI इंजन है, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन इंजन है, उसका कैसे वर्किंग है, हाउ इज दैट कार एक्सेलरेटिंग सो फास्ट? गेस व्हाट द प्रोफेसर्स रिप्लाई वाज, दिस इज नॉट इन द सिलेबस. मान गया नहीं है सिलेबस में. मगर अगर ये एक यूनिवर्सिटी होती जिसको होता क्लियर कि यार मेरे को बच्चों को इनोवेशन सिखाना है, जो पहली गाड़ी नहीं आई है मार्केट में वो लाके खोलो ना यहाँ पे, उससे सीखो. So the real mistake was not the robot here. But before I talk more about the real mistake, I would like you guys to know that I am India's top family business mentor for the next gen in the family business. What that means is I work with the family businesses, third generations or more, with the founders, with the fathers and with the sons. And I am specializing in succession planning. I am specializing in conflict resolution. आज की डेट में बाप बेटे के conflicts हो रहे हैं, father son एक दूसरे से align नहीं हो पा रहे, businesses are not growing, and this is exactly where I specialize in setting up a typical roadmap for the son to take charge, take lead in the family business, and for the father or the senior generation to take the mentorship role or the role of that of a coach in the family business. If you would like to know more about that, comment below or just WhatsApp me on the number below. Yeah. So what was I saying? So the real mistake में robot problem नहीं थी. उस केस में मतलब जो लीडर हैं वहाँ के या जो डायरेक्टर्स हैं यूनिवर्सिटी, वो बोल सकते थे कि हाँ यार हम ग्लोबल एडवांसमेंट स्टडी कर रहे हैं, हमने 50 तरह के रोबोट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं और उनसे हम अपने बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सिखा रहे हैं. देखो जी हम इतने आगे की सोच रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, आओ भेजो अपने बच्चों को. सो दैट इज़ द कवर अप. अब आप कवर अप दिखा रहे हैं कि नहीं जी एक प्रेस रिलीज़ है कि ये जो लेडी है
I think her name was Dr. Neha or Miss Neha, ki she is ill-informed or she was not well-trained or something. You should own up. You know, the worst thing you can do here is disown your own team who's representing you at the AI summit. I think that was a very immature move. You should just own up, because again, why would you put this in the newspaper here? Who's approving these newspaper ads? It costs a lot to put a full page ad in the Times of India. अब इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने फैमिली बिजनेसेस में. आप में से कुछ लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, कुछ लोग हैं जो सर्विस में हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग में हैं. हम सबके साथ होता है यार कि फॉल्टी शिपमेंट रिसीव होगी कस्टमर को, या शिपमेंट डिले होगी कस्टमर को, या कस्टमर ने कोई कंप्लेंट करी कि गलत पार्ट ऑर्डर हुआ. हम कोशिश करते हैं कि उसको ना छुपा दें, उसको हम दिखाएं ना कि यार क्या फॉल्ट है. यार द थिंग इज, कस्टमर इज स्मार्टर देन अस. He already knows what you're trying to cover up. And when you try to cover it up, you are actually damaging your own reputation, because then the customer is losing trust with you. What would make more sense, a lot more sense here, is just own up the mistake, give an action plan, and move further and build gain some trust in a way that the customer further relies on you. यार कि हाँ, they have owned up कि they messed up with the shipment, they messed up with the product. इन्होंने लेट भेजी शिपमेंट या इन्होंने डिले कर दी. मेरे साथ कितनी बार हुआ है यार, कितनी बार नहीं, मतलब जब भी हुआ है कि यार शिपमेंट जानी है, इटली की शिपमेंट है, जानी है, लेट हो गए यार. अब इंडिया से इटली, नावाशिवा से डिस्पैच होती है, इटली पहुंचने तक 8 हफ्ते का टाइम है. मेरी शिपमेंट अगर 1 हफ्ते भी लेट हो गई, मेरी शिपमेंट तो टाइम पे पहुंचनी है ना. उनका जो डिस्पैच डिलीवरी टाइम है वो तो टाइम पे रहना है. बट इंडिया से अगर 1 हफ्ता भी डिले है, मैं उसको बाय एयर भेजूंगा, बाय शिप नहीं भेजूंगा, because I have to honor my commitment to the customer, and I will bear the cost. I'll bear the premium freight, whatever extra cost I'm paying. And the parts that I'm making are pretty heavy to send by air, but we've done it. अब इसमें अगर हम देखें, एक मार्केटिंग लेसन भी है. आपको इतनी ज़्यादा लाइमलाइट, इतनी ज़्यादा PR मिल गई, आप इसका एडवांटेज लेते. You could have taken this opportunity as a branding opportunity. It would have shown accountability for you. It shows confidence. It humanizes the organization. यार इंसान है, गलतियाँ करते हैं. अब हमने कितनी बार सुना है, न्यूज़ में भी आया है कि यार फलानी कंपनी ने, टोयोटा ने 15,000 गाड़ियाँ recall kari because one particular part was faulty in it. Now I don't know exactly what name of the company was. Maybe it's not Toyota, maybe it's BMW, but it is just for the reference. Don't quote me here. But we have seen in the automotive industry, and I am coming from the automotive industry, is why I am talking about the automotive examples, ki yaar, these companies have recalled so many cars because later they found out कि यार this particular part was faulty and the entire batch was brought back and they were changing the parts and then they were sent back. That is what won the customer loyalty, that they accepted their mistakes and then rectified them. So to conclude, I would say many founders believe कि यार अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी और उनकी ईगो हर्ट होने से ऑर्गेनाइजेशन को हर्ट होगी. मगर नहीं, आपकी गलती मानने से ना आपकी रिस्पेक्ट इंक्रीज हो रही है, और अगर आपकी रिस्पेक्ट इंक्रीज हो रही है, आपका डेफिनेटली ट्रस्ट इंक्रीज होगा. And on that note, I would like to also invite you. We are doing a 12-week projects program. If you are next gen in the family business, do message below on the WhatsApp number below projects, and we will share the details with you. It is a 12-week intensive program, and I look forward to also seeing you in person someday. Thanks for watching this video, guys. Again, if you like this video, give it a thumbs up. If you don't like it, give it a thumbs down and share it with someone who you think will find value from it. Thanks for watching.